Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today we are doing examples, solved examples 2.8 to 2.11. Let's start. 2.8. Two spherical balls of 2.0 kilogram and 3.0 kilogram M1 2.0 kilogram and M2 3.0 kilogram. Masses are moving towards each other. एक दूसरे की जानब मूव कर रहे हैं with velocities of 6.0 meter per second. V1 6.0 meter per second and V2 4 meter per second. ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है, so it is -4 meter per second respectively. What must be the velocity of the smaller ball after collision smaller ball, that is M1. तो V1 प्राइम हमने फाइंड करना होगा, whereas V2 prime is given as if the velocity of the bigger ball is 3.0 meter per second. We shall use law of conservation of momentum. Using law of conservation of momentum. M1 V1 plus M2 V2. Momentum before collision should be equal to M1 V1 prime plus M2 V2 prime. Putting the values, M1 2 kilogram, V1 6 plus M2 3, V2 4 minus 4. M1 V1 prime, M1 2 V1 prime to be found plus M2 3 and V2 prime 3. Solve. 12 minus 12 2 V1 prime plus 9. It comes out to be 0. 2 V1 prime plus 9. 2 V1 prime is equal to minus 9 and V1 prime minus 9 over 2 minus 4.5 meter per second. Negative sign means that after collision it is moving opposite to V2 prime. M2 के अपोजिट ये मूव कर रही है. सो दिस इज दी, और इसकी मैग्नीट्यूड को हम यूं ही लिखेंगे, नेगेटिव साइन shows that it moves opposite to M2 और मैग्नीट्यूड इसकी V1 प्राइम 4.5
5 meter per second ही होगी. So this is 2.8. Now we're doing example 2.9. A 70 gram ball M1, 70 gram, that means 0.07 किलोग्राम. 1000 के ऊपर डिवाइड करके किलोग्राम बना लीजिए. Collides with an other ball of mass M2, 140 gram, 0.14 kilogram. The velocity of the first ball V1, 9 meter per second, and one की velocity 9 meter per second, while the second ball is at rest. V2 is 0. V2 is 0. If the collision were perfectly elastic, collision elastic collision है, what should be the velocity of the two balls after collision? V1 prime find करना है and V2 prime find करना है. तो इनके फार्मूला आपको आते होंगे. V1 prime is equal to M1 minus M2 over M1 plus M2 V1. What are the values? M1 0.07 minus M2 0.14 over 0.07 plus 0.14 into V1 9. इस V1 प्राइम को आप कैलकुलेट करेंगे तो यू विल गेट -3 मीटर पर सेकेंड. V1 prime is -3 meter per second. Similarly, V2 prime 2 M1 over M1 plus M2 V1. Put the values. 2 M1 0.07 over M1 0.07 plus 0.14 into V1 9. इसको आप कैलकुलेट करें कैलकुलेटर की मदद से. तो V2 प्राइम दिस विल बी 6 मीटर पर सेकेंड. V2 prime is 6 meter per second. 2.10. A particle A of mass 1 kilogram M1 is 1 kilogram is moving with the initial velocity of 5 meter per second. V1I 5 meter per second towards right, collides with the stationary target B of same mass M2 same, that is 1 kilogram, or V2I at rest, that is 0. After collision, the particle A moves at an angle of 30 degree. तो collision के बाद जो पार्टिकल A है यानी V1F है वो 3 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा है 30 डिग्री पर. V1F is equal to 3 meter per second and theta 1
is 30 degree with the speed of 3m. The particle B moves with the horizontal at an angle of 53 with the speed of 4 meter per second V2F. 4 meter per second and theta 2, that is 53 degree. So let's try to understand the situation. And a particle of mass m1 1 kilogram, it collides with the other particle of same mass but at rest. It is m2, it is m1. It is moving in this direction with the velocity v1i और कोलाइड करने के बाद v1f at an angle of 30 डिग्री और ये पार्टिकल जिसके साथ कोलाइड हुआ है v2f and this angle is 53 degree. This is the situation. Prove that collision is elastic. तो आपने प्रूफ करना है कि ये कोलिजन इलास्टिक है. तो ये प्रूफ करने के लिए दो चीजें हम प्रूव करेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी. मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, इसको इसकी कंजर्वेशन प्रूव करने के लिए इसके कंपोनेंट्स बनाने पड़ेंगे. दिस इज v1f(x) और ये किसके बराबर होगा, v1f cos 30, v1f cos 30 and this is v1f sin 30. सिमिलरली इसके भी कंपोनेंट्स बनाने पड़ेंगे. इसके कंपोनेंट यूं बनेंगे, एक इधर और एक इसी तरफ ही है, इधर लिख लेते हैं जी. दिस इज v2f sin 53 और इस डायरेक्शन में v2f cos 53. So let's apply law of conservation of momentum. Law of conservation of momentum along x-axis. Along x-axis. Now 1v1i, initial momentum of the system, plus its momentum is 0. m2 v2 f circle m1 v1f cos 30 plus m2 v2f cos 53. This is the law of conservation of momentum along x-axis. Yes, put the values. m1 1, v1i 5 is equal to m1 again m1 v1f 1, v1f 3 cos 30 0.86 plus m2 1 v2f 4 cos 53 0.6. मल्टीप्लाई करेंगे, it comes out to be 5. It is 2.6 plus 2.4 5. It is also 5.
ये मोमेंटम है, ये मोमेंटम, तो इसके यूनिट्स होंगे जी इनिशियल मोमेंटम 5 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड एंड फाइनल मोमेंटम 5 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड. Initial momentum is equal to final momentum. This is the law of conservation of momentum. Then ये प्रूव करना है कि ये कुलियन इलास्टिक है, तो इसके बाद इसकी काइनेटिक एनर्जी, प्रूव दैट कुलियन इज इलास्टिक. हाँ, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी वन ओवर टू m1 v1 i square, 1 over 2 m2 v2 i square, 1 over 2 m1 v1 i square, 5 का स्क्वायर plus m2 v2 i 0. So this is 25 over 2, 12.5 joule. Final kinetic energy 1 over 2 m1 v1 f square, 1 over 2 m2 v2 f square, 1 over 2 m1 1 v1 f square 3 square फाइनल का 1 over प्लस 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 फाइनल काइनेटिक एनर्जी 1 over 2 m1 v1 f square plus 1 over 2 m2 v2 f square, 1 over 2 into 1 v1 f 3 का स्क्वायर प्लस 1 over 2 m2 v2 f का स्क्वायर 4, 9 over 2 plus 16 over 2, 25 over 2 is equal to 12.5 joule. Comparing 1 and 2. Comparing equation 1 and 2. तो initial kinetic energy is equal to final kinetic energy. So the collision is elastic. Two point 2.11 and last. A projectile of mass 2 kilogram m1 2 kilogram is moving with an initial velocity of 4 meter per second v1i 4 meter per second towards right दाएं तरफ जा रहा है and hits a target at rest of mass 3 kilogram at rest v2i is equal to 0 meter per second. After collision the two masses stick together. कोलाइड करने के बाद ये दोनों स्टिक कर जाते हैं और एक बॉडी बन जाता है
और इनका कंबाइंड मास होगा m, m1 प्लस m2, 2 plus 3, 5 kg. This is the combined mass. After collision, the two masses stick together and move as a single body with the velocity of 1.6 meter per second. इसकी VF 1.6 meter per second. Show law of conservation of momentum and energy losses during the perfect inelastic collision. तो चूंकि ये inelastic collision बताई गई है, इसमें मोमेंटम तो कांस्टेंट रहेगा लेकिन काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट नहीं होगी. हम उसके लॉसेस डिटरमिन कर लेंगे. इनिशियल मोमेंटम m1 v1i plus m2 v2i. m1 2 kg, v1i 4, m2 3 और v2i 0, 8 kilogram meter per second. This is the initial momentum. Final momentum collision करने के बाद is equal to mvf. m is now 5 and vf is now 1.6. 8.0 kilogram meter per second. This is initial momentum. This is final momentum. Comparing 1 and 2. Initial momentum is equal to final momentum. So, law of conservation is satisfied. Now we come to kinetic energy. Initial kinetic energy. 1/2 m1 v1i square plus 1/2 m2 v2i square. 1/2 m1 2 v1i square 4 का स्क्वायर प्लस 1/2 m2 3 v2i square 0. 4 cancels with the 4. 4 14 are 16 joule. Kinetic energy final 1/2 m vf square 1/2 5 vf 1.6 एंड 1.6 का स्क्वायर लें, उसके बाद इसको 5 से मल्टीप्लाई करके 2 पे डिवाइड करें तो ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी इट कम्स आउट टू बी 6.4. लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी
16 minus 6.4, 9.6, I think 9.6 joule is the loss of kinetic energy, because the collision is inelastic. Therefore, the solved examples these have been finished. और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।